इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंत दास। जयंत नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया अमरीश। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Cabinet approves a memorandum of understanding between the Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Ministry of Natural Resources, Guyana, on the cooperation in the hydrocarbon sector. Key domestic indices end in the green. Sensex closes at 72,026. Nifty settles at 21,711. And government completes the successful auction of 91 coal mines. मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा गुयाना के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी दी। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स 72,026 और निफ्टी 21,711 अंकों पर बंद हुआ और सरकार ने 91 कोयला खानों की नीलामी को सफलतापूर्वक पूरा किया। In our top story, the Union Cabinet has approved the proposal to declare Ayodhya Airport as an international airport and naming it as Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhya Dham. Elevating Ayodhya Airport to international status is paramount for realizing Ayodhya's economic potential and its significance as a global pilgrimage site, opening doors to foreign pilgrims and tourists. The Union Cabinet also approved the signing of a memorandum of understanding between the Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Ministry of Natural Resources, Guyana, on the cooperation in the hydrocarbon sector. The MOU covers a complete value chain of the hydrocarbon sector, including sourcing of crude oil from Guyana, participation of Indian companies in the exploration and production sector of Guyana, cooperation in the areas of crude oil refining and capacity building. In addition to the above, the Union Cabinet was apprised of signing of a memorandum of understanding between India and the US for international development and India-USAID India in June last year for supporting the Indian Railways to achieve mission net zero carbon emission by 2030. Besides, the Union Cabinet was also apprised of an MOU signed at Port Louis, Mauritius between Indian Space Research Organisation ISRO and Mauritius Research and Innovation Council MRIC. The MOU will help to establish a framework for cooperation between ISRO and MRIC on the development of a joint satellite as well as for cooperation on the use of the MRIC's ground station. Jayanto, quite interesting bits of news here backed by legal agreements, even though an MOU means that there would be the signing of more concrete agreements later. What's your take on the international airport being set up in Ayodhya? What are the footfalls that one expects at this pilgrimage site now that there has been a development of a tent city there as well? Well, see, the important part is to understand that Ayodhya, after the completion and obviously the starting of that particular mandir as a destination, and in addition to the Ram Mandir, whatever is being developed as an ecosystem for a tourist hub and specifically as a pilgrimage hub, the infra ecosystem has to be superb. So obviously for the domestic tourists per se, roads and roads and railroads and all are available. What's important is also to connect it, and as we know, I think Air India and Indigo are already flying
from this month onwards to Ayodhya from Delhi and Bangalore and other cities. A natural step forward would be to make it an international airport so that tourists who would like direct to visit and pay their respects and homage to the city as well as visit the city can go there. In terms of numbers, I do expect whenever you announce an international airport status to any particular airport, they have an extrapolation of numbers which they expect in the next 5 to 7 years. Obviously, in terms of traffic and specifically religious traffic, which is an important forte of the Minister of Tourism also in India on an overall plan basis. One wouldn't be knowing the figures per se right now, how much we expect and all, but then the technical studies would have some international figures in terms of international tourist inflow and all. But if you work out beyond what the figures are and how we should expect the airport to grow, there are 3 important things for any international airport to sustain. One is an interest for obviously international tourists, which is a natural cause over here. The second is infrastructurally whether the airport is ready or not. And we know it's a fantastic new airport which has come in. And obviously there has been a 25-year vision of making the city not only just a smart city, but also one of the best in terms of providing those facilities. And third is the city's domain, should I say, strengths in attracting tourists. The city, both as a historical destination as well as of the present temples and other infrastructure there are a natural consequence. We know Diwali is celebrated in a huge manner. It attracts a huge number of tourists there, and I'm sure there will be more such celebrations to come in the years to come. But we completely agree for the ecosystem to develop, for the ecosystem to make a mark, and also Ayodhya to be brought in into a global map in terms of a religious destination. It's important to create that international airport status. जयंत, मंत्रिमंडल ने आज काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले किए, ख़ास तौर से विज्ञान के क्षेत्र में। जैसे मॉरिशस के साथ इसरो ने जो समझौता करेगा, उसके अनुसार एक छोटा सैटेलाइट वो मिलके छोड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि स्पेस में किस तरह से भारत ने काफ़ी तरक्की की है और हम सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ये मॉरिशस के साथ सैटेलाइट छोड़ने की बात है, तो इससे क्या फ़ायदे भारत को होंगे? देखिए, मूल तौर से मैं इसमें 3 टिप्पणी खास करके देना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई भी देश, चाहे छोटे हो बड़े हो, चाहे टेक्निकली कितना भी एडवांस्ड हो, बहुत ज़रूरी होता है समझना कि पार्टनरशिप्स के साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होते हैं। बिकॉज ब्रेन डजंट हैव जोग्राफिकल बाउंड्रीज, राइट? लेकिन ये ज़रूर है कि उस ब्रेन को डेवलप करने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, और से स्पेस, एविएशन, ये सभी अलग सेक्टर नहीं है, नंबर 1। सेकेंड, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया का स्पेस रिसर्च जिस रेट से आगे बढ़ा है और जिस दर मतलब ये कि जो खर्चा होते हैं स्पेस रिसर्च में, इस तरह का खर्चा विदेश में हो तो शायद हमारा जो अलग से आउटकम आया है, जहाँ पे हम मून मिशन, मार्स मिशन चलाया, मून मिशन चलाया, जो भी स्पेस मिशन अलग से चला रहा है लगातार, और अगर आप पिछले 20, 25, 30 साल का दौरान जो लीप्स एंड बाउंड्स में जो माइलस्टोन्स अचीव किए इतना कम दरों में, वो शायद हो नहीं पाता। तो एक बहुत अनदर इंपॉर्टेंट मेजर माइलस्टोन है। अब बात यह है कि कहानी ये ख़त्म नहीं होता है, इससे आगे हम कैसे बढ़े, इससे और भी सस्ते से और भी अफोर्डेबली किस तरह से हम पहुंचाएं मिशंस को, उस मिशन को किस तरह से रिसर्च करें, और उसमें एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं। हम सबको पता है कि डिस्पाइट द कोल्ड वॉर बिटवीन रशिया एंड यूएस इन द 60s एंड 70s, उस वक्त भी दोनों देशों में, हालांकि देयर वाज ऑलवेज अ फाइट कि कौन पहले मून में जाएंगे और अमेरिका पहुंच गया पहले, तो वो तो नॉर्मल है। ग्लोबली इस तरह का देशों का बीच में एक कंपटीशन होता है, और खास करके 2 देशों में जहां पे कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन उसका बावजूद भी टेक्नोलॉजिकल मिशन में काफ़ी हेल्प रशिया ने की है, काफ़ी सारी चीज़ों में, इनपुट्स में, और यूएस में भी लगातार काफ़ी सारे इनपुट्स उनको किए हैं उस दौरान भी जब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में डिप्लोमेटिक तौर से मैं मानता हूँ इंडिया के लिए जितना भी आसपास का नेशंस है, खास करके मॉरिशस जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी है इंडियन ओशन में, ऐसे एक रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं, सबको पता है, और उस पुराने रिलेशनशिप होने के दौरान ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जहाँ पे इस तरह के कोलैबोरेशन का साथ ये रिसर्च वो लोग करना चाहिए। और before we go into the story any further, let's go for a short commercial break and please stay tuned on Market Mantra. अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ
वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. Jayanto, the major international news when it comes to oil and gas has been Chevron, which is a competitor to Exxon in the US, has acquired Hess Corporation, and the reason is that Hess Corporation has a huge stake in Guyana because of its oil and gas reserves. Now we have a MOU between the Ministry of Petroleum and Natural Gas and Guyana on cooperation in the hydrocarbon sector. So what are the potential we are looking at here so that India goes one step further towards being self-sufficient in oil and gas? Well, first we have to understand is self-sufficiency in oil and gas is a really long run, in that sense, program and dream and all. So obviously more than just self-sustenance, is also important to understand the alternative sources which we can replace the hydrocarbon fuels as of now. That's the first thing. Secondly, to understand what is happening in Guyana and the specific importance of this particular MOU, that obviously, as you rightly said, would further trigger off a lot of other contracts to be worked out over there. I think strategically it also has an interest, given the fact that despite the largest conglomerates, should I say, in terms of oil companies having their presence there and having their work out over there, I think the government to government contract plays a separate role, which will not be in direct conflict of what the private companies and sectors are doing there. But having said so, I must also put in a small disclaimer, and that is, see, globally, whatever oil fields you look at, they are some way or the other under the clasp is a negative word though, under some sort of attachment umbilically to the 3 or 4 top major oil giants. So you just can't wish them away if you are playing in this particular hydrocarbon market. जयंत, जिस तरह का गयाना के साथ जो समझौता हुआ उससे मिलता जुलता एक और फैसला मंत्रिमंडल ने किया कि रेलवे के क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत रेलवे में जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन उत्सर्जन है, उसको कम करने और ख़त्म करने की तैयारी है। इसको आप किस तरह से इसको विश्लेषित करेंगे? देखिए, मूल तौर से इसमें जब खास करके रेल या रोड नेटवर्क की बात करते हैं हमें 2 चीज़ देखना है। एक तो रोड नेटवर्क पर हम शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं है, मेरे को भी कुछ दिन पहले तक पता नहीं था जब तक आंकड़े नहीं आया था। रोड नेटवर्क में इंडिया अभी सेकंड लार्जेस्ट है, इवन लार्जर देन चाइना। हालांकि चाइना का रेल नेटवर्क, फास्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क इज़ अराउंड 42,000 किलोमीटर, जो इंडिया का नहीं है। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन चाहे आप रोड नेटवर्क डेवलप करें, चाहे आप रेल नेटवर्क डेवलप करें, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करते हुए बहुत ज़रूरी है कार्बन फुटप्रिंट कम करना। और थोड़ी देर पहले जैसे हम कह रहे थे, हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के ऊपर ना डिपेंड करके किस तरह से क्लीनर एनवायरनमेंट में शिफ्ट करें। इलेक्ट्रिफिकेशन वाज अ मेजर स्टेप जहाँ पे कोशिश किया था अगर सरकार ने भी। मैं मानता हूँ ये वाला जो MOU साइन हुआ लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बिजली तो कोयले से ही आ रही है। 70% बिजली, 60 से 70% बिजली कोयले से आ रहा है। तो ऑब्वियसली लॉन्ग रन इफेक्ट में अगर आप फिर से देखें, इट्स नॉट एग्जैक्टली कार्बन फुटप्रिंट रिप्लेसमेंट, बट बहुत ज़रूरी होता है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा, और हम सबको पता है खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और US में, इन टर्म्स ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी दे आर फार मोर अवेलेबल देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आई एम श्योर ये वाला पर्टिकुलर MOU भी उस हिसाब से रेलवे क्षेत्र में अलग से सस्टेनेबल फुटप्रिंट्स को ठीक करने के लिए, अच्छे करने के लिए कोशिश करेंगे ये MOU। और अब चलते हैं शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं। दुनिया के बाजारों से आ रहे मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज बढ़त दर्ज की गई। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 179 अंक यानी 0.25% बढ़कर 72,026 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक यानी 0.24% की तेजी के साथ 21,711 अंकों पर जा पहुंचा। बम्बई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.19% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.61% बढ़ा।
The key domestic stock market indices ended in the green amid mixed cues from the global share markets. The BSE Sensex gained 179 points, a 0.25% to close at 72,026. Nifty also rose 52 points, a 0.24% to close at 21,711. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose 0.19% and the small-cap index gained 0.61%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 15 appreciated while 15 declined. TCS increased by 1.93%, Larsen and Toubro climbed 1.62% and Infosys rose 1.37%. On the other hand, Nestle India fell 1.65%, Sun Pharma declined 0.98% and JSW Steel lost 0.86%. In sectoral indices at the BSE, 15 sectors gained while 5 witnessed losses. Information technology rose 1.29%, capital goods added 1.27% and tech gained 1%. On the other side, commodities lost 0.43%, healthcare reduced 0.29%, and consumer durables slipped 0.24%. The overall market breadth was positive as shares of 2,223 companies appreciated, while those of 1,612 declined. A total of 101 companies remain unchanged. और विदेशी मुद्रा बाजार में $1 का मूल्य 83 रुपए 23 पैसे दर्ज किया गया. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार के दौरान 102.76 के स्तर पर था. जयंत, जैसा शेयर बाजार का हाल हमने आज भी देखा कि बढ़त की तरफ था, और जबकि सप्ताह की शुरुआत में हमने देखा कि थोड़ा मुनाफा वसूली भी हुई. तो आपको क्या लगता है कि अब ये ट्रेंड अगले हफ्ते कैसे चलेगा? करेक्शंस आएंगे, फिर बढ़ेगा, या क्या, किस तरह की आपको सूरत दिखाई दे? देखिए, 2 आंकड़े हैं इसमें. एक तो अब पिछले 8-10 साल का दौरान अगर देखें, जनवरी का रिटर्न्स हमेशा थोड़ा वोलेटाइल रहता है और उतना अच्छा नहीं होता है जैसे लोग उम्मीद करते हैं कि शायद नया साल में कोई अलग से कुछ उछाल है. दूसरी बात यह है कि इस बार खास करके 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, और एक ये भी आंकड़े हैं कि पिछले 5 साल का दौरान जनरल इलेक्शंस का पहले जो 6 महीना का जो ट्रेडिंग होता है उसमें रिटर्न्स करीबन 15 से लेकर 29% तक होते हैं आते हैं. तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका अवधि क्या है निवेशों का. अगले 5-6 महीने का दौरान अगर आप निवेश करके रखना चाहते हैं कुछ स्टॉक्स में, तो मैं मानता हूं कि इसमें रिटर्न्स आपको करीबन डबल डिजिट में बेशक मिलना चाहिए. मार्केट्स में उस तरह का फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, और फंडामेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ एक जो रन अप टू द इलेक्शन रैली है वो भी एक चलता रहता है. और लोग, आप सबको पता है कि आज का तारीख में डेवलपमेंट, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ों के ऊपर उम्मीद रखे हुए चलते हैं कि भाई शायद इस नतीजे भी हमें पहुँचे. तो उसका साथ साथ जब तक कोई बड़ा घटना ना घट जाए जियो पॉलिटिकल सीन में ग्लोबली, तब तक मैं मानता हूं कि इसमें कोई ना कोई मार्केट में ओवरऑल एक तेजी बरकरार रहेंगे. बेशक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, देयर विल बी सम बैड वीक्स अनडाउटेडली, लेकिन अगर हम जनवरी से लेके मई जून तक बात करें, मार्केट्स का स्ट्रेंथ ओवरऑल ब्रॉडली ऑन द अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेंथ होगा. So today the FIIs, FPIs were the net buyers to the tune of almost 1,700 crore rupees, and the DIIs were the net sellers. But the question is, the volatility index for India has gone down by 5% today. It went down by 6% yesterday, at 12.63 today. What does that tell you? Does that tell you about retail participation in the market, or is it just the institutional players who are buying and selling in the market right now? See, Arjun, the retail players have been there in the market. I mean, I don't see in the last 7 to 8 months, if we take figures, retail players have vehemently come in, and obviously the market movers are the DFIs and the FIIs and things like that. But in terms of retail interest in the market, there has been a strong retail interest, as a result of which some of the IPOs have done phenomenally well. And as I said right before your question, the retail interest is going to get sustained in the next 6 months. Given the market at these levels, they are a high chance of going up further, at least by 8 to 10% from here. If not less. But what's important to understand is there are 2 major rate cuts expected in the US this particular fiscal, and obviously there will be another sort of market mover or a market accelerator sort of milestone activities if those rate cuts are announced, at least if the first rate cut comes before March. So continuing from your question, I think the retail investor at this point of time is informed well enough to stick on to their gains at this point of time. They are not doing an immediate profit booking as
maybe the FIs and FDFIs would be doing in some of the sectors, specifically in IT and all those sectors where they're really investing in a very short term, 2-3 weeks sort of a domain plan. But on the whole, I think markets broad base would see an excellent rally in the next 5 to 6 months. We don't have data regarding the volume of transactions in the cash market right now. But before we go into the futures market, let's go for a short break and please stay tuned on Market Mantra. जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra, discussion on the stock market with the business analyst Jayanta Das. Jayanta, we're discussing about the cash market. We had 2 days of fall and then 2 days of gains, including today. But the gains today was of 179 points only. What is the F&O market telling you about next week? You have the weekly F&O and you have the monthly F&O as well. Will there be a correction next week? Well, I do see some volatility happening at least in the next fortnight, if not the next week per se. And this is not just completely linked to the F&O, but also I think the markets would like to let off some steam at this point of time, which I think would be a healthy move, given that there will be some corrections and there will be some consolidation at higher levels, if not at these levels. और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल जान लेते हैं। एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 0.27% बढ़ा, जबकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में बढ़त 0.32% की रही। दूसरी ओर चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.86% की गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.67% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.35% गिरा। दिन के कारोबार में यूरोप के बाजारों में गिरावट का रुख देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 1.28%, लंदन का फुट्सी 1% और जर्मनी का डेक्स 0.95% नीचे चल रहा था। We're seeing that despite talking about green technology and what the COP26 countries have decided, coal prices have actually gone up globally as well. Why is that the case? Well, see, the dependence of coal as a sustainable fuel at this point of time has still not been written off. So let's not, be in that thing that demand of coal is going to fall. In fact, if you look at one of India's leading coal companies, Coal India, and if you look at his results, and specifically last month, the amount of buying of coal which it did itself alone has been phenomenal record itself. I think the largest ever historically. And as I said, 60% of coal still is responsible for producing our electricity. What we keep on forgetting is the electricity requirement has gone up almost 10 times in the last 15 years. So the quantum of coal requirement, while it has percentage-wise may have fallen, but the quantum of requirement of coal has phenomenally risen. So that's the other cause where I said that the coal story is not something which is in the last mile. It's obviously going to wane off because sustainable fuels are the demand likely as per our commitments to the international goals. But it's a story which is likely to remain given the robust power requirement which India has and is being met also. We also have now the first advanced estimates of national income 2023-24, and this has been released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today itself, Jayanto. And if you look at two very interesting metrics on macroeconomy, one is the real GDP, the other is a nominal GDP. The real GDP, the growth in real GDP during 2023-24 is estimated at 7.3% as compared to 7.2% in 2022-23. And then we have nominal GDP, which is not taking into account inflation. That is estimated at 8.9%, the growth in nominal GDP during 2023-24 as compared to 16.1% in 2022-23.
So my question to you, Jayanto, is that the growth of any economy is always challenged by inflation and deflation. So we don't have deflation right now, but there are inflationary pressures, especially headwinds from overseas. Yeah. So the real GDP figures are very important. You have 7.3% estimate. You have the IMF saying 5.7%. How important is inflation right now, and how's the government tackling it so that it is able to maintain its GDP figures? See, there are three relevant things over here to understand. The first part which we need to understand is inflation is there. I mean, we can't wish it off, and it's there at quite high levels. And there are two ways of tackling it, obviously. One is through, obviously, the monetary policy mechanism, which is the forte of RBI. And the other is a direct tax mechanism, which is the forte of Government of India. And of course, to ensure that goods flow freely and are accessible and freely available, mostly. What's important to understand over here is, which you rightly said, connecting it of global headwinds on interest rate, on inflation, which is also pumping up Supply side. on the supply side. To this extent, I do believe that there will be some tapering off of inflation this particular year globally, and its direct effects would be reflecting in India also domestically. Whether they would be at rates which we expect to is not going to happen that fast, because inflation never crashes that fast. और चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने बताया है कि अब तक 91 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है। कोयला मंत्रालय के अनुसार 6 वाणिज्यिक खदानों ने पहले ही कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है और अन्य 3 में आने वाले महीनों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी प्रणाली की मदद से मंत्रालय ने नीलामी के 7 दौर सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। Well, let's have a look at the equity markets in the US and the oil market globally. In the US, the 2 out of 3 US stock market indices ended with losses yesterday. The Nasdaq Composite Index lost 0.27%, while the S&P 500 fell 0.03%, while the Dow Jones Industrial Average rose 0.03%. Let's have a look at the crude oil market now. Oil prices gained today in intraday trade. Brent crude was trading at $78 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $72.77 per barrel when reports last came in. Very briefly, oil prices have actually come down because the US is now a principal supplier of crude oil, 14 million barrels per day. How does that impact India right now? Because India has multiple providers of this commodity. Well, the sweetener couldn't have come in at a better more time, especially with the elections ahead. So I guess we do foresee some crash, if not crash, at least some fall in oil prices from here domestically. और सराफा बाजार का हाल जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के अनुबंध के लिए सोने के मूल्य में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सोने का मूल्य 155 रुपए की गिरावट के साथ 62,485 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च के अनुबंध के लिए चांदी 170 रुपए की कमी के साथ 72,167 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। Just briefly before we end, a lot of bullishness on gold, especially with global headwinds. Your views very briefly. Well, I do believe that with rate of interest falling, gold will also become an important destination for investment. और इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए जयंत आपका धन्यवाद। शुक्रिया। And before we close, a reminder of the headlines. Cabinet approves a memorandum of understanding between the Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Ministry of Natural Resources, Guyana, on cooperation in the hydrocarbon sector. Key domestic stock market indices end in the green. Sensex closes at 72,026. Nifty settles at 21,711. And government completes a successful auction of 91 coal mines. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।